नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में। शुरुआत करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक से। जस्ट एज होली ब्रिंग्स अ वाइब्रेंट मिक्स ऑफ कलर्स, द मार्केट टू हैज पेंटेड अ डायनामिक पिक्चर ओवर द पास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस. In line with our expectations, the benchmark index staged a spirited pullback rally of over 700 points in just 5 trading sessions. However, on Monday it hit a resistance zone at 22,670 to 22,700 zone, where the confluence of 20-day EMA and 38.2% Fibonacci retracement level of its prior downward journey formed a barrier, much like a playful splash of colors meeting with a firm wall. Since then, the index has been moving within a narrow 362-point range, reflecting a phase of consolidation rather than a breakout burst. Similar to how Holi celebrants pause before the next round of festivities, the market seems to be catching its breath. Technically, the index near term में 22,700 to 22,200 zone के बीच consolidate होने के chances है. The daily RSI has been oscillating in the 42 to 39 range for the last 6 sessions, and the trend strength indicator ADX has been in the falling mode for 7 sessions, signaling a lack of strong directional momentum. We believe the ongoing pullback rally might still have a few more vibrant colors to the splash on the market canvas. क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो इंडेक्स का इमीडिएट हर्डल 22,670 टू 22,700 जोन में फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जोन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. इस रीजन में 20-डे EMA और पहले का डाउनवर्ड जर्नी 23,807 टू 21,965 का 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लेस्ड है. अगर इंडेक्स ये रेजिस्टेंस तोड़ने में सक्सेसफुल होता है तो अपमूव एक्सटेंड होकर 23,000 टू 23,300 लेवल्स तक जा सकता है आने वाले सेशंस में. वही डाउनसाइड पर 22,300 टू 22,200 जोन एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा अगर कोई इमीडिएट डिक्लाइन होता है तो. As traders, much like Holi celebrants waiting for the perfect moment to strike, patience will be the key. A clear breakout will set the stage for the next big move. Let's embrace this colorful pause and prepare for the next vibrant market move. Now, talking about Sensex technical outlook, the benchmark index Sensex oscillated within a tight range of 1,143 points throughout the week, reflecting a phase of indecision in the market. Despite the earlier volatility, it failed to gain strong momentum and ultimately ended the week on a bearish note, signaling cautious sentiment among market participants. Currently, the index is trading below its short and long-term moving averages. These averages are in a falling mode. Most noteworthy, during the recent pullback, the 14-period daily RSI failed to cross the 40 mark, which is a bearish sign as per the RSI range shift rules. आगे जाके 20-डे EMA जोन ऑफ 74,600 टू 74,700 इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा. अगर इंडेक्स 74,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो पुलबैक रैली एक्सटेंड होकर शॉर्ट टर्म में 75,500 तक जा सकता है और उसके बाद 76,200 तक भी पहुंच सकता है. वही डाउनसाइड पर 73,300 टू 73,200 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा. अगर इंडेक्स 73,200 के नीचे स्लिप करता है तो साउथवर्ड जर्नी रेज्यूम होने के चांसेस है. ऐसे में शॉर्ट टर्म में ये 72,500 तक टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 71,800 लेवल तक भी जा सकता है. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टीज टेक्निकल आउटलुक, द बैंक निफ्टी, अ क्रूशियल gauge for India's banking sector, has been underperforming the frontline indices for the past 6 trading sessions. However, despite this relative weakness, the index has managed to hold the crucial support zone of 47,800 to 47,700, where multiple swing lows are positioned. This places the index at a make or break juncture, with its next directional move likely to set the tone for the broader banking sector. Among its key constituents, ICICI Bank, HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank have been demonstrating strong relative outperformance, providing some stability to the index. On the flip side, IndusInd Bank and Axis Bank continue to lag, adding pressure to the overall structure. Notably, IndusInd Bank has been the major drag on Bank Nifty's performance this week, plunging over 27% in just 4 trading sessions, significantly contributing to the index's weakness. अगर क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो इंडेक्स के लिए 47,800 टू 47,700 का जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा. अगर इंडेक्स 47,700 के नीचे स्लिप करता है तो डाउनवर्ड जर्नी रेज्यूम होने के चांसेस है, जिसमें ये शॉर्ट टर्म में 47,000 तक टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 46,500 तक भी जा सकता है. वही अपसाइड पर 48,400 टू 48,500 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल का काम करेगा. टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स टू वॉच एज पर द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ, टेक्निकली देखा जाए
The Nifty Metal, Nifty Financial Services, Pharma and Healthcare sector are likely to outperform in the short term. While on the flip side, the Nifty IT has given a consolidation breakdown on a daily scale, which indicates it is likely to underperform in the short term. Further, Nifty Auto and Nifty Capital Market are likely to continue their underperformance. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in on Monday for more such market updates and insights, and wish you all and your family a very happy Holi. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.